Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Hi, I'm Chetan Bansal. So इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई कैसे कंटेंट राइटिंग पे इम्पैक्ट कर रही है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है नित्रा। इज बेसिकली इज अ I just introduced Netra. Is a computer science background and is also the researcher in reputed organization like London Business Schools and IIT Delhi. And she also provide a AI consultant and like Nita also author is a three book and two poetry and his latest book is a AI Course. In this book is a combination of a generative AI and AI and forensic part and is also the book also available in Google. Right, Nita? Yeah, it's Well, there on Kindle and Google Books, wherever. या तो बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है यहाँ पे हम एआई के बारे में बात करेंगे और कंटेंट राइटिंग पे वो क्या इम्पैक्ट करे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं एआई के बारे में। तो नेता आपके हिसाब से कि लाइक एआई क्या है, मतलब एआई के एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और लाइक एआई कैसे स्टार्ट हुआ, तो सा ओके आइडिया। तो मतलब स्टार्ट तो काफी पहले से ही हो गई थी इन थियोरेटिकली बातें अबाउट एआई बट इफ वी मतलब डेली इफ वी लुक एट इट नाउ वी नो कि वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं चैटबॉट्स है नाउ वी हैव चैट जीपीटी वी हैव अ राइट। लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी नो कि एआई इज देयर एवरीवेयर so there are a lot of divisions for it like people might have heard the words like natural language processing computer vision फिर अब बातें हो रही हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो सकती हैं तो ऑल ऑफ दिस राइट। इज कमिंग अंडर एआई ओनली बट अगर इन सबको छोड़ के सिर्फ बेसिकली देखेंगे तो इट इज सिंपली डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स ताकि वो अपने आप कंप्यूटर कर सके एंड कंप्यूटर इज बेसिकली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है ना हम उसको बस बता रहे हैं कि ये डेटा है और आप कैसे इसको यू कैन जनरेट थिंग्स या इनसाइट्स प्रोवाइड कर दो या हमसे काम ही करा दो लाइक हाउ वी हैव रोबोट्स आल्सो नाउ राइट। so that's pretty much how AI is to be and it's a big umbrella of a lot of words but यस। yeah सो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लाइक कार्टून की बात करें तो सबने डोरेमोन देखा है। डोरेमोन इज द फर्स्ट एआई yeah एंड लाइक नोबिता आल्सो इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, फर्स्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ऐसे और भी हमारे जैसे एवेंजर की बात करें, मार्वल्स की, वहां पे आयरन मैन हो गया, जार्विस हो गया। तो साइंस फिक्शन में ही पहले से चलता आ रहा है। अब ये जाके रियल वर्ल्ड में लाइक 2022 से तो ऐसे ही मार्केट में आया कि लाइक जनरेटिव एआई क्या है। पहले नॉर्मल hmm. जो एआई थे हमारे चैटबॉट थे हैं, जो मतलब प्री प्रिपेयर्ड थे, जैसे हमारा गूगल एलएस, गूगल हो गया, गूगल ओके हो गया, सिरी हो गया, एलएस, उन पे पहले से डाटा था। अब जो yeah है, अब जो चीज है वो जनरेटिव एआई है कि हम उन्हें डाटा देंगे और खुद से न्यू कंटेंट जनरेट करेंगे, राइट। yeah ओके, सो लाइक अब कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करते हैं कि एआई जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है कंटेंट क्रिएशन पे, और लाइक क्या अपॉर्चुनिटी एज अ बिजनेस और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके। ठीक है so for sure like you and me both you generate a lot of YouTube content I राइट। generate written content so content creation can be anything like reels हो गए हैं videos music any of it and generative AI is basically AI which is capable to generate anything now we even have codes that can be generated through AI so मतलब it has taken over the content market completely and now suppose for example मेरे को कोई आर्टिकल लिखना है एंड आई डोंट नो कि मैं इंस्पायर कहाँ से हूँ या फिर इफ आई गूगल सर्च द टॉपिक आई सी कि 50 लिंक्स आ रही हैं 100 पेजेस हैं अब मैं कहाँ से क्या उठाऊंगी मेरे पास हाउ डू आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग तो ओवर हियर जनरेटिव एआई वर्क्स ग्रेट आई कैन से मेरे को लाइक लेट्स टेक अप एनी टॉपिक फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई एंड कंटेंट ओनली अब मैं सेम चीज अगर चैट जीपीटी से पूछूंगी तो एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स दे देगा कि ये टॉपिक्स एग्जिस्ट करती हैं तो मैं उसके अंदर रिसर्च कर सकती हूँ तो for me as a writer, the content generation part is doing a great job for inspiration, but also for people who are on Instagram and all. I'm not sure if you've seen like there is this one person who is operating out of US. What he does is he takes one dance video and उसको ना वो generative AI डाल के he makes it look like Elon Musk is dancing on it, ओके। yeah, Modi is dancing on it. So he like changes the person and shows a different video altogether. And उसका पूरा business ही उसी से run होता है. तो जहाँ पहले जॉब्स नहीं थे या जहाँ ये वाला कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे भी न्यू कंटेंट आ चुका है। एंड विद रिगार्ड्स टू कोड मतलब व्हेन आई वाज़ इन 11th एंड 12th इवन स्टफ लाइक फिबोनाची सीरीज़ या कुछ बहुत बेसिक सीरीज़ जो भी होते थे, तो भी दिमाग लगाना पड़ता था कि यार क्या है? और सब कुछ स्टार्टिंग से यू वुड कोड।
राइट। बट नाउ अब हेडर्स हो गए या कोई लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी हो गई, जो सेम चीज हर कोड में आता ही रहता है. जनरेटिव एआई इज एबल टू लिटरली मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग रेडी फॉर यू. ओके, सो लाइक हम चैट जीपीटी का एग्जांपल लें, तो पहले जहाँ पे हमें आर&डी में रिसर्च करने में ज़्यादा टाइम जाता था, गूगलिंग करना हो गया, तो कंटेंट राइटिंग में एज अ चैट जीपीटी जो है वो टाइम सेविंग है रिसर्च या के लिए या भी। मतलब मुझे भी कोई आर्टिकल लिखने बुलेट पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आई जस्ट पुट ऑन द की टॉपिक ही है, मुझे बुलेट पॉइंट चाहिए आउटलाइन, तो इज ओके फॉर इजीली। एग्जैक्टली. ओके, सो लाइक जो यहाँ पे एआई जो कंटेंट जनरेट कर रहा है, तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ह्यूमन राइटर पे या जो भी एडिटर है कंटेंट राइटिंग के लिए उसके प्रोसेस में, तो वहां पे क्या एआई बिकम कर रहा है, लाइक ऐसा क्या जनरेट कर रहा है वो कंटेंट? Matlab, what is like how are humans playing a role in राइट। this? Yeah. So, for example, let us take I when I was in college, I was the head of content of a student magazine. ठीक है, and people would send their poems या short stories etc. for me. अब what I can do, अगर मेरे पास बहुत सारे submissions हैं, मुझे छांटना है कि यार 1000 हैं, मेरे को 100 चाहिए, और मैं 100 जो है मैन्युअली रिव्यू कर सकती हूँ, बट 1000 से 100 करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो व्हाट आई कैन डू नाउ इज कि पैरामीटर सेट कर दो, ग्रामर, टोन और कंटेंट क्या था, कितने रेफरेंसेस यूज करे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसा भी मुझे चाहिए. एंड आई कैन फीड ऑल द आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर. वो खुद 100 मतलब छाट के दे देगा कि इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये वाले सही हैं. फिर वहां से मी एज एन एडिटर या फिर मी एज चूजिंग द आर्टिकल्स, आई विल नो कि ठीक है, आई मीन लाइक दीज आर द वंस दैट आई शुड गो अहेड विद. तो जहां मुझे 1000 का एफर्ट लग रहा था, मेरे को सिर्फ 100 का लगेगा. So the major point that plays comes into play is efficiency. And जैसे you also said कि Google राइट। searches थे, अब कम हो गया है वो सब. So that is also saving our time, giving us more optimized results, etc. अब so I'll give you an example of this research paper that I literally just finished working on. So it is about AI with liver transplantation and cardiovascular risk analysis. ठीक है. अब I am not a medical person at all. मेरे को पसंद भी नहीं है ये सब और मेरे को आता भी नहीं है ये सब. बट आई हैड टू रिव्यू लाइक अ लॉट ऑफ पेपर्स, एंड उसमें मेडिकल टर्म्स हैं, एंड उसमें इवन दो एआई का पार्ट है, बट सारा एआई तो नहीं है और मेरे को राइट। नहीं समझ आएगा. बट आई वांट टू वर्क ऑन इट, आई वांट अ पेपर. तो आई कैन आस्क कि ठीक है, इस पेपर को कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर मी, इसको थोड़ा आसानी से समझा दो. तो वो मेडिकल टर्म्स वगैरह को भी ना समझा देगा इन बेटर वर्ड्स, ताकि एटलीस्ट मुझे समझ तो आए कि चल क्या रहा है. तो researching now has become easier because you can touch topics you don't even know about. And of course पढ़ना तो पड़ेगा, इन काम तो है ही, but it has become easier and you don't have to be scared कि ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मैं नहीं कर सकती. तो that also has become easier. तो एक कंटेंट राइटिंग के लिए लाइक उनके लिए पहले एक स्पेसिफिक डोमेन था कि हाँ उन्हें इसकी नॉलेज है तो उस पे पढ़ सकते हैं, पर आप ओपन टू डोमेन हो गए कि अगर कहीं से भी कंटेंट आएगा वो ग्रैब कर सकते हैं इजीली, राइट? Yeah, exactly. ओके। Also on Insta, when you see captions and all, राइट। suppose your favorite footballer is a Brazilian. For me, like my favorite footballer is Neymar, okay? And उसके सारे जो captions होते हैं ना, वो Spanish या Portuguese में लिखता है. हम्म। I don't even know exactly कौन सी language है, but उसमें ना नीचे आ जाता है C translation वाला button. राइट। So now everything he is saying can reach me also. I can understand. वरना पहले कॉपी पेस्ट करो, वो गूगल भी ट्रांसलेट गूगल पे पे। जाओ, राइट। एंड कौन करेगा? मतलब इंस्टाग्राम का एक कैप्शन के लिए तुम इतनी मेहनत नहीं ले सकते हो. यू राइट। वांट टू नो व्हाट द पर्सन इज सेइंग. एंड इवन आई केम टू नो दैट ओपन एआई हैज पार्टनर्ड विद स्पॉटिफाई, एंड जहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट थे पहले, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट कुड बी यूरोपियन कोई लैंग्वेजेस या समथिंग एल्स, या फिर इवन एक्सेंट फॉर द मैटर, जब जो लोगों को समझ नहीं आती है. नाउ स्पॉटिफाई विल ट्रांसलेट that one podcast in any language you want to hear. So your content is reaching globally everywhere. So even you for the अंडरस्टैंड। matter, अब किसी को हिंदी नहीं समझ आ रही है and somebody in Australia wants to like know कि क्या बात हो रही है हमारी, so they can translate it and hear it in English. And I mean, how great is that कि या अब possible हो गई है ये सब. So yeah, Google translations के अलावा अब now there's global reach. There is so many other facilities which can help you promote your business altogether. जैसा अभी आपने बताया आपने भी एआई यूज कर रखा है जैसे चैट जीपीटी, तो ऐसा कहीं हुआ है कि लाइक आपने कुछ चैट जीपीटी से ऐसा कंटेंट लिखवाया हो, आप लाइक थोड़ा सा सरप्राइज हो इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी?
Yeah, of course. So not just ChatGPT, I think there are a lot of other platforms like DALI, Midjourney. ये सारे like they create images, Right. etc. है ना? So when I was writing this book AI Cop, so basically it is about forensic science and artificial intelligence. तो पहले how I used ChatGPT to my advantage was कि मुझे ये topic पे लिखना है and I have an idea कि what I want the book to be about. बट अब कौन से चैप्टर्स में इसको डिवाइड करा जाए ताकि जो कोई और पढ़ रहा है जिसको नॉलेज नहीं हो ना फॉरेंसिक साइंस की ना एआई की, वो बता सकता है कि चैट जीपीटी बता देगा कि ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहले तो मैंने वहां से हेल्प की। देन सेकंड, आई डिड नॉट हैव अ बुक कवर डिजाइनर, बट आई हैड जनरेटिव एआई। तो आई न्यू कि ठीक है, शायद बुक कवर हैज टू लुक समथिंग लाइक अ साइबॉर्ग, या फिर इट हैज टू लुक एआई रिलेटेड। Right. तो आई लिटरली जनरेटेड माई बुक कवर यूजिंग जनरेटिव एआई, एंड दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव टू मी बिकॉज पहले तुम किसी को हायर करोगे, आप किसी को डिजाइन भेजोगे, वो आपको भेजेंगे, फिर आप ठीक True. करोगे, ऑल ऑफ Right. दैट। There was nothing. I was self-sufficient and I could launch it completely. So that was something I found amazing. But before Okay. all of this came into play, I think I was in my second year or something, 3 4 years. मतलब पीछे, there was something called deep fakes, which you Right. might know about. Yeah. So the first time I saw it was a Tom Cruise ka video, and I came to know there's an entire TikTok channel about Tom Cruise where he's playing a guitar or doing some magic. Right. But actually वो Tom Cruise है ही नहीं, मतलब किसी ने उसका वीडियो अल्टर करा है। एंड द ट्रूथ इज उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह वर सो गुड, लाइक कि तुम बोल ही नहीं सकते हो कि वो एआई जनरेटेड था। So Right. that time I was very impressed कि the potential of AI is so much that literally you can fool anybody. Like nobody will know whether this is a human generated context or a AI generated context. ओके। मेरे साथ भी ऐसा था, लाइक जब मैंने बुक लिखी थी अपनी, जो बेसिकली हैकिंग पे था कि अपना करियर हैकिंग में, तो लाइक मैं भी थोड़ा सा उसमें था कि लाइक नई बुक है, कैसे लिखना है कैसे नहीं है, और उसमें क्या क्या पॉइंट आने हैं। तो वो मैंने खुद वहां से बनवाया था कि चैट जीपीटी से कि लाइक अगर मैं ये वाला पॉइंट लिख रहा हूँ तो ये कौन से सेक्शन में आना चाहिए और कौन से ब्लॉक में आना चाहिए। तो आई एम मैं भी वहां पे सरप्राइज था कि हाँ भाई इतना क्रिएटिव कौन हो सकता है एक बार में। तो Yeah, यार हम किसी भी ह्यूमन पे जाए तो लाइक वो एक एक घंटा 2 घंटे या लाइक एक दिन ले लेगा, पर वो around. लाइक विद इन अ सेकंड विद इन अ मिनट उनने आंसर दिया था उन चीजों का। तो Yeah. लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर अदर्स की लाइक अगर वो अगर उन्हें कंटेंट क्रिएटर करना है एज अ एआई के साथ तो कौन से एक्सप्लोर करने चाहिए एआई टूल्स और क्या क्या एडवाइस होनी चाहिए आपके हिसाब Uh, yeah, sure. So when I one thing like I would want to say is कि अब ना on LinkedIn when you go scroll through it, you will see कि लोगों ने ना कुछ पूछा होगा चैट जीपीटी से कि what is your view on this latest tool या something, और लोग as it is ना copy paste कर देते हैं से? चैट राइट। जीपीटी का उठाया हुआ कंटेंट, एंड वो इजीली पता चल जाता है for somebody कि यार ये तो नहीं लिखा होगा इसने शायद, एंड उस पे इमोजीज अलग होती हैं, हैशटैग्स भी डली होती हैं, सब कुछ होता है, वी जस्ट नो दैट दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट। अब शायद नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता चले क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि कितना मतलब एआई जनरेटेड हो सकता है। बट व्हेन पीपल लाइक मी और यू हु आर इनटू टेक्निकल फील्ड्स एटसेट्रा एंड आर इन टच कि हाँ एआई ऐसा देता है आंसर, देखते ही पता चल जाता है कि यार ये तो कॉपी या पेस्ट करा हुआ उनके है। बज़-वर्ड ऐसे हो जाता है कि लाइक कि पर ना भी उन्हें देखना पड़ता है कि इमोजी कहाँ पे यूज़ किया और कैसे यूज़ किया, तो आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। आराम से। तो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि यार अब सभी कंटेंट जनरेटर्स बन जाएँगे, सभी कंटेंट क्रिएटर्स बन जाएँगे, किसी को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। राइट। एंड इसी रीज़न से ना कंटेंट विल मल्टीप्लाई इंटो सो मेनी डिफरेंट रीज़न्स, राइट। एंड यू विल बी लाइक यार ये पॉइंट क्या है? व्हाई शुड आई स्पेंड 5 मिनट्स रीडिंग दिस जब मेरे को पता ही है कि दिस इज़ नॉट रिटन बाय दिस पर्सन। एआई से कोर्स। लिखवाना था तो वो तो मैं खुद ही कर लेती। तुमने न्यू क्या दिया? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? So there has to be a human touch to whatever content you create. Uh, but of course, like now, generative AI is so good कि अब पता करना कम हो गया है. But फिर भी यार, you have to have that intellectuality, यार, your own innovation ideas that have to be put across. So that's like number one. If you're a content creator, be it a video, या be it a whatever an article, you have to have your original idea in place. भले आप AI से इंस्पायर हो या फिर AI को यूज करो, but you have to have that. So like of course for content too, I everybody knows about ChatGPT and now there are more competitors राइट। that are in the market. So any of whatever you use is supposed to be good only. Like almost all of them are coming at par. Though I have only used Quillbot and I have used ChatGPT. So these two are good.
regarding image creation and all, I tried Dali, but I think it's become paid, and so I didn't try it more. But there are so many apps now. Like I literally use an app on my phone which gives you like 10 prompts. आप दे सकते हो एक दिन में वो 10 emojis बना के दे देगा आपको per day. So अभी तक उसमें पैसे नहीं मांग रहे तो it's cool. But क्या कहते हैं? There is literally everything out there. I think Synthesia is there for video editing. Right, Like so there are a lot of tools, so if literally anybody wants to take help of AI so they can आराम से. And other like business creators हैं who are like wanting to sell something out of their homes, it could be like छोटा bakery है but I want to make it into a startup, so even they can use AI to their advantage. uh, एक तो we already have stuff like Squeaky Genie and we have like दुनिया भर की चीजें already available, but अब मेरे को website बनाना है, so you can take your content from ChatGPT कि what are you wanting to say, और बोल दो ChatGPT को like इस टोन को तुम थोड़ा आसानी से change the tonality, change the language, but data तो आप ही को provide करना पड़ेगा, right, like what is it, and if you want like I mean websites बन जाएंगे, videos बन जाएंगे, लिटरली एनीथिंग दैट यू रिक्वायर, जहाँ पहले 100 लोगों की टीम थी कि 10 लोग वीडियोस बनाएंगे, 10 लोग ये करेंगे वो करेंगे, इट्स केपेबल ऑफ हेल्पिंग यू कम्प्लीटली टू स्टैंड ऑन योर ओन right. फीट. So not just content, but even business creators can use generative AI to their advantage. Okay, so like I maybe कंटेनर कहते तो like I just read कि ह्यूमन टच तो होना चाहिए पर उसके साथ जो आइडिया ऑफ क्रिएशन है वहां पे क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए ऑफ कोर्स. अगर प्रॉपर आप एआई से लिखवा रहे हो तो उसका जो प्रॉम्प्ट होगा उसमें भी आपको एडिंग करनी पड़ेगी आपकी Yeah, yeah. क्रिएटिविटी क्योंकि Prompt engineering is very like vital, and it's so important also राइट. because, for example, you want to see a puppy on a horse. ठीक है, the way you will imagine it will be different than I will imagine it, and the way I will tell AI will be different the way you will tell AI, और जो राइट, images बनेंगी वो भी अलग होंगी. तो at the end of the day आपका effort तो जा ही रहा है. You have to know what you want to convey, so that is there. सो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन टच होना ज्यादा जरूरी है जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट. Yeah, yeah, any day. सो For the बेसिकली matter, no, like there is this MIT study which you might also be interested in, and anybody who's viewing this will also be interested in. I read it like literally 2 3 days ago. तो उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करा where they said कि हम किसी रिटेल या प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज करेंगे with the help of AI, and also like थोड़े like motives and campaigns, for example eat less junk food या ऐसा कुछ भी जो हमको सुन के अच्छा नहीं लगता है हम बात नहीं मानना चाहते, वैसे वाले कैंपेन्स ना उन्होंने डेटा सेट इकट्ठा करा और 4 डिफरेंट तरीके से उसको प्रोड्यूस करा. वन वाज़ प्योरली मेड बाय ह्यूमन्स, ओके, one was like made by humans but edited with AI, one was made by AI but edited by humans, and one was purely made by AI. ओके, तो जब लोगों से पूछा था कि व्हिच वन डू यू लाइक द बेस्ट, उन्हें बताया नहीं था कि किसने क्या करा है. तो दे सेड दे चोज द एआई वन, which is somehow scary for us because we are putting in so many efforts for content and now they are choosing that. बट जब उनको बताया गया कि ये थे और ये एआई ने बनाया है, ये एआई के साथ ह्यूमन्स ने हेल्प करा है, तो उन्होंने ना जो ह्यूमन वाला इन्वॉल्वमेंट था उसको प्रेफर करा. So we can assume कि even us as humans, we have a bias towards what humans have done. राइट, मतलब because machine क्या करे यार उसको, like how do we care about it now? We care about तुमने क्या produce किया, what is your input, and wherever it comes like sensitive matters आ गए कहीं, if somebody wants to talk about discrimination या moral ethics like stealing, murders, whatever it be, you can't expect AI to have a moral code. You can't expect कि वो समझेगा human issues को. So राइट. you require human involvement completely. And we can also say कि हाँ human की तरफ bias है, pro bias है. Can also say कि AI की against bias है. मतलब we don't know how other people perceive it, but there are so many studies which are showing कि the combination of humans plus AI might be the best result for us. ओके, सो बेसिकली हम अब तक हमने बात की कि एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है कंटेंट राइटिंग में, या फिर अगर अच्छा कंटेंट बनाने एज अ बिकम अ कंटेंट क्रिएटर विद एआई तो हमें ह्यूमन टच का होना ज़्यादा ज़रूरी है उसमें. तो आपने कुछ केस कही उससे कि राइट. Yeah.